Involve and solve with Evolve Science classes. हेलो डियर चिल्ड्रन, आज एक नया वीडियो शुरू किया है, पर इसका लिंक हमारे पहले वीडियो से ज़रूर मिलेगा। याद है क्यूरोसिटी? क्यूरोसिटी का जो बुक है क्लास 6 का, उसी का ये फर्स्ट चैप्टर है और हम उसे अब कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब ये पैराग्राफ क्या कहता है? लेट्स हैव अ लुक। What does this paragraph tell us? This paragraph tells us about that there are different other materials also. कौन से materials हैं? Paper we write, metal key, plastic ruler, rubber, eraser. In our box, the magnets that keeps the box closed, the clothes we wear, the cup we drink, milk in, and so many other things. What are they made up of? ये सारी चीज़ें किससे बनी हैं? हमारे दिमाग में ख्याल तो ज़रूर आया होगा। Are they made up of different materials? How do we separate different materials from one another? ये सारे questions हैं जो हमारे दिमाग में चलता ही रहता है। So let us continue. Now we will have an almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this book. तो ये जो क्यूरोसिटी वाला बुक है, इसको हम जितना पढ़ेंगे हमारे क्वेश्चंस और आते चले जाएंगे और हमें उसके आंसर्स भी मिलेंगे। बट वाई लिमिट अवर क्वेश्चंस टू अर्थ अलोन? तो हमें अर्थ पे ही अपने सवाल क्यों ख़त्म करने हैं? अर्थ के बाहर भी तो एक दुनिया है। क्या है वो? The sun, the moon, the stars, our galaxy. Let us talk about them. So this is all the world which is beyond earth. Okay? Whether you are learning about the structure of the leaf, you remember? Discovering how things move or separating the skin of a peanut seed. We hope each chapter of this book will ignite your spirit of inquiry. And hopefully, you will have lots of questions in your mind. Even though you may not realize it, you have already been finding answers to many of your questions. Suppose your pen stops writing. कई बार होता है ना, अचानक से लिखते लिखते पेन लिखना बंद कर देता है। What would you do? You would ask yourself the question, why did pen stop writing? You might guess that the ink finished. कई बार ऐसा होता है, हम कई काम करने चलते हैं और वो नहीं हो पाता है। You remember? कई बार हम स्विच ऑन करते हैं और बल्ब जलता ही नहीं है। क्या सवाल आते हैं मन में? Think about it. You would then test this guess by opening the pen and checking the ink refill. होता है ना? If it is empty, you would know that your guess is correct. अगर आपको पेन में लगा कि इंक है नहीं, तो चलो आपका guess right है and you discard the pen and you use a new one. Yes? Now what would you do? You would make another guess. Perhaps the ink might have dried up. To test if this guess is correct or not, you will have to try something else. ये जो आप सारे काम कर रहे हो, पेन नहीं खुला, नहीं चला, तो आप उसे खोल कर देख रहे हो, इंक है या नहीं है, ड्राई अप हो गया या कोई और प्रॉब्लम है। डियर, you are a scientist now. You are trying to find out questions. Your curiosity is developing. So, where there is curiosity, there is science. Okay, dear children? This is exactly how science works. The way you tried to find out your pen stopped working is an example of scientific method, and you become little scientists. Activity. These activities are quite interesting. Let us see. Let us think and write. Write about a similar problem that you tried to solve. What steps did you take? मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए आपने स्विच ऑन किया, बल्ब नहीं चला, तो आप क्या क्या गेस करोगे और उसे रेक्टिफाई फिर कैसे करोगे? लिटिल साइंटिस्ट, थिंक ऑफ इट.
Science is not just memorizing facts, figures, or doing experiments. It is about following a step-by-step process that helps us to find answers to our questions. So what are the steps that we can follow? ठीक है, अब हम वो देखेंगे steps क्या है. First, we observe something that we find interesting and we do not understand. कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगती है या हमें समझ ही नहीं आता है. अगर इंटरेस्टिंग लगती है तब भी हम उसके बारे में सोचना समझना चाहते हैं, और अगर हमें ना समझ आए तो हम ज़रूर समझना चाहते हैं. दिस मेक्स अस वंडर and perhaps think of a question about it. Then we guess a possible answer to the question. These are all the steps that we follow, okay? We test this guess through experiments or more observations. We then try to analyze the results to see if it is actually answered our क्वेश्चन. एनालाइज मतलब हम दोबारा से उसे देखते हैं कि क्या हमारे सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं. इसे हम एनालाइज कहते हैं. साइंटिस्ट्स, मैंने आपसे क्या कहा, आप सब मिनी साइंटिस्ट्स हैं. तो हु आर साइंटिस्ट्स? हियर यू गेट द आंसर. साइंटिस्ट्स आर पीपल हु फॉलो साइंटिफिक मेथड्स टू सॉल्व problems or to discover new things. But anyone who follows the scientific method is working like a scientist. Someone cooking food may be wondering why the dal has spilled out of the cooker. Was there too much water? Now this guess or analysis will make that person think like a scientist. Think of a bicycle repair. Person trying to find out why the tire is flat, from where did the air leak out, or an electrician trying to find out why the light bulb is not working. Okay, so do you find? I have already asked you this question in the beginning of this video. So try to find out, guess and analyze your answers about why a light bulb is not working. When we try to ask questions and find out answers in a way, we are all scientists. Activity 2. Describe a daily life situation where you feel someone was following a scientific method. Do you now realize that there are several daily life situations where we knowingly or unknowingly apply the scientific methods? कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप से ये सारे साइंटिफिक स्टेप्स फॉलो करते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता कि अरे हम तो मिनी साइंटिस्ट हैं. पर इस बुक के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आप सब में कहीं ना कहीं एक छोटा सा या एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट छुपा हुआ है. Though we all apply the scientific method, to some extent, learning science will develop our capabilities for finding solutions to bigger problems and solving more mysteries of the universe. ये बड़े बड़े साइंटिस्ट बने कैसे? Their all steps were smaller earlier. They took little steps and then grew bigger. And to be able to learn science well, the first and the foremost thing is to be curious. Until and unless you are curious, you are not going to become a scientist. And observe your surroundings keenly. And when we are curious, we start posing questions, asking how and why. Just remember, the world is full of things we do not know, things that are waiting to be explored. Can you give me one word in the comment box that things that are waiting to be explored? What is this process called as? मैंने इस प्रोसेस के बारे में कई बार डिस्कस किया है मेरे पुराने वीडियोस में भी. क्या आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं इसका मीनिंग क्या है या वन वर्ड क्या है? Now coming to the next and the third activity. Let us think and write. If you have to ask
why about something, what would you ask about? Try to write down how you would attempt to find an answer to your question. Science is rarely done alone. Scientists across the world work together, often in large teams. So, if you cannot find an answer yourself, ask your friends to help you out. It is always more fun to discover things together. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? टीम वर्क. साइंटिस्ट अकेले भी कई बार देखा गया, बहुत रेयरली केस में, कि वो अकेले काम कर रहे हैं. वो हमेशा टीम में काम करते हैं. क्यों? क्योंकि मोर ब्रेन्स आर वर्किंग टुगेदर. कहीं आप रुक जाओ तो आपका फ्रेंड आपको एक नया एग्जाम्पल दे सकता है. तो इट्स बेटर टू वर्क इन टीम एंड बिकम टीम साइंटिस्ट्स. Look how the children are performing an experiment here so nicely, and they all are working together as a team. Of course, remember that you will not find answers to all your questions within grade 6. Do not worry. You are embarking upon a journey of science for the next 5 years and even beyond. ये class 6th का जो grade है, ये जो curiosity की book है, ये यहीं ख़त्म नहीं होती. ये तो शुरुआत है. पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त. आगे आगे देखिए आप कहाँ जाके रुकते हैं. शायद आप एक नामी साइंटिस्ट बन जाए इन बुक्स के थ्रू, और आप बीइंग क्यूरियस, आपके क्वेश्चंस, आपके गेसेस, आपके एनालिसिस आपको ज़रूर हेल्प करेंगे टू बिकम अ ग्रेट साइंटिस्ट. And this is how, much like children enjoying the rain, science is all about joyful exploration. Enjoy your scientific journey, keep exploring, and never stop wondering about the amazing mysteries of the universe and asking questions. Are you ready to embark the exciting journey of the science? Let us get started. So here we don't end, we start. And when we start, we get to know many things and come up with different questions. So here we end up this lesson, but I will definitely come up with the exercise and some questions regarding this lesson. Thank you. Goodbye.